Good morning, students. Today we are going to start with the revision of our first chapter, that is Constitution. So, my first question is, why do we need a constitution? भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है? Basically, what do you mean by constitution? You all know that constitution is a set of rules according to which we govern our country. So, why do we need a constitution? हम कोई रूल बना सकते हैं, हम गवर्नमेंट का चला सकते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है फिर? तो इसके लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स that allow minimum coordination among the member of a society which are legally enforceable. भाई हमें रूल्स तो हमने बना दिए, लेकिन अगले अगर हमने उनको लीगली एनफोर्सेबल नहीं कराया तो कोई सिटीज़न उसको माने, कोई सिटीज़न उसको ना माने, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो हमें कुछ ऐसा लीगल प्रोविज़न अपनाना पड़ेगा ना कि एवरी वन इज़ एनफोर्स्ड बाय दीज लॉज, ठीक है ना? तो दैट इज़ mentioned in our constitution. So who can decide which rules are best to suit the society? अब ये कौन डिसाइड करेगा? भाई अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है हमने रूल्स बना लिए, बट अब रूल्स डिसाइड कौन करेगा? हु विल डिसाइड द रूल? आपके स्कूल में कुछ हो रहा है, कोई कंपटीशन हो रहा है, आर्ट से रिलेटेड कंपटीशन है, तो आर्ट एक्सपर्टीज टीचर उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाएंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई कंपटीशन है तो स्पोर्ट्स टीचर रूल बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वही है, अगर इफ़ वी आर गवर्निंग द कंट्री, सो हु विल मेक द रूल्स अकॉर्डिंग टू इट? दैट द ones who are expert in politics, है ना, the ones who are expert in the society, they will make the rules to govern the society. The constitution specify the basic allocation of a power of a society, ठीक है ना? So it decides who get to decide what the laws will be. The Indian constitution, it is specified that most instances parliament get decide the laws and policies, and parliament itself be organized in a particular manner. तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्न द कंट्री, ठीक है ना? सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? The very first function of a constitution is to provide a basic set of rules that allow minimum coordination among the member of the society. Second function is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. The third function of a constitution is to set some limits on what a government can be imposed on its citizen that are fundamental in sense the government may never trespass them, कि गवर्नमेंट भी उनको साइड नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो देम. The fourth function is to enable or to fulfill the aspiration of the society and to create condition for a just society. Fourth is that we have to enable a society that fills the aspiration, ठीक है ना? गवर्नमेंट लोगों की, सोसाइटी की जो एस्पिरेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको पूरा करेगी और ये कोशिश करेगी दैट वी विल क्रिएट अ जस्ट सोसाइटी, है ना? जस्ट सोसाइटी तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है ना, रॉल्स थ्योरी में. व्हाट आर द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल? that the people has a collective identity that come into being through the basic constitution, ठीक है ना? The constitution set authoritative constraints upon what you may or may not to do. It defines the fundamental values that we never trespass them. So those, it gives a moral identity. Now what is mode of promulgation? This refers how a constitution comes into being, कि constitution enforce कैसे लगा, who will drafted the constitution and how much authority do they have, कि उनके पास कितनी authority होगी और वो कैसे, ठीक है ना? Okay, so why countries like India, South Africa and US are the most successful constitution? Because they are created after a popular national movement. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी इतनी लंबी स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हमने बनाया. इसी तरीके से साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन भी अपार्थाइड सिस्टम की, उसके बाद नेल्सन मंडेला ने इतना फाइट किया, उसके बाद बना. इसी तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बाद जो मूवमेंट्स हुए, उसके बाद जो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना. So what does are in the overview of Indian Constitution? Formally created by the Constituent Assembly,
between December 1946 to November 1949, and it takes 2 years, 11 months, and 18 days. Drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn by the people who enjoyed एनमस पब्लिक क्रेडिटेबिलिटी, मीन्स वो लोग इसमें शामिल थे जिनको पब्लिक ने क्रेडिट दिया हुआ था कि हाँ दे हैज़ अ कैपेसिटी टू नेगोशिएट, उनके अंदर एक कैपेसिटी थी, वो नेगोशिएट करते थे, who were able to convince the people that constitution was not an instrument for देयर पर्सनल पावर, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनकी एक पर्सनल पावर नहीं है, वो उसको एज ए पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते. इट गिव्स एवरीवन इन सोसाइटी, ठीक है ना. क्या 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 प्रोविजंस हैं अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. एवरीवन सोसाइटी सम रीजंस टू गो अलॉन्ग विद द प्रोविजंस, अलाउड परमानेंट मेजोरिटी टू oppress minority groups within society, systematically privilege some members at the expense of others, that systematically entrenched the power of small groups in the society. हर systematically everything is mentioned there कि जो smaller member of the society they must also be using them, ठीक है ना. Okay, what do you mean by a balanced constitutional design? Design of the constitution is to ensure that no single institution acquire monopoly. कोई भी single institution, whether it is legislative, whether it is executive, कोई भी जो है अपनी सिंगल अथॉरिटी, सिंगल मोनोपोली नहीं चला पाएगा, ठीक है ना. इट मे बी इट एंश्योर दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर्स कैन चेक इट ट्रांसग्रेशंस, कि एक अगर कोई भी गलत कर रहा है तो दूसरा उसकी चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके से सिस्टम में गलत कर रहा है, ठीक है ना. कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट स्ट्राइक राइट बैलेंस सर्टेन वैल्यूज, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, ठीक है ना. इट इज़ टू रिजिड लाइकली अ ब्रेक और वेटेज ऑफ अ चांस, ठीक है ना, कि आप इसको इतना जल्दी चेंज भी नहीं कर सकते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू रिजिड, ठीक है ना. इट इज़ टू फ्लेक्सिबल आल्सो, ठीक है ना, that we are, if we want to make some changes we can make, but some changes we are not going to make easily change. कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो हम इसमें नहीं कर सकते. हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है ना. According to the cabinet mission plan, each provinces, each these are the provisions that are mentioned in the constituent Constitution of India, that each province, each princely state or each group of states were allotted seats proportional to the respective population. One is to how much? 10 lakh, ठीक है ना. इतने लोगों के पीछे एक सीट होगी, ठीक है. द सीट इन ईच प्रोविजन जो डिस्ट्रीब्यूट होगी, 3 मेन कम्युनिटीज़, मुस्लिम, सिख एंड जनरल कम्युनिटीज़. मेंबर ऑफ ईच कम्युनिटीज़ जो है वो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली, वो अपने आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल transferable vote that you have studied in election and representation also. So these are what is objective resolutions. It is defined as the aim of the assembly moved by Nehruji in 1946. This resolution was encapsulated the aspiration and values behind the constitution. Based on this resolution, our constitution gave institutional expression to the fundamental commitments: equality, liberty, democracy, sovereignty, and a cosmopolitan identity. So main points of objective resolution: India is an independent sovereign state, India shall be a union, ठीक है ना. Territories forming union, autonomous power होगी उनके पास. All the powers and authority of sovereign and independent India and its constitution shall be flow from the people. All people of India shall be guaranteed and secured social, economic and political justice, ठीक है ना. What do you mean by, ठीक है ना. So this is all about the main points that we have studied in our Indian constitution. Minorities, everyone has having adequate safeguards in the Indian constitution. So these are the main points that we have taken some our constitution from some other countries also, that is from Ireland, British constitution, and American constitution, Irish constitution, you can say Australian constitution also. So from the British constitution, what we have taken, the nominal head, that is the president,
cabinet system of ministers, post of PM, parliament type of government, bicameral parliament. These provision we have taken from the British Constitution. So this is all for today's. I have gone through with the main points of the chapter. Have a good day, students.